Good morning to my dear students. Students, as in our previous video, we were talking about photosynthesis and I discussed about the various experiments done by various scientists in the field of discovery of photosynthesis. So in the same series today, students, I will tell you about the site of photosynthesis. Actually, what is the actual site in green plants where the photosynthesis takes place and what are its various steps. So students, I want to tell you that photosynthesis process takes place only in the green parts of the plants, and as we know that the mostly the leaves are green in color, so the photosynthesis occurs there. And actually within the leaf, if I will talk about a leaf, so if you will observe the structure of a leaf, so within a leaf the photosynthesis occurs in mesophyll cells. There are some specialized cells in the leaf which are called mesophyll cells. There the process of the photosynthesis is going to occur. Why? Because it contains some specialized structures, and these structures are called as chloroplast. So we have to say that actually the chloroplast present in the mesophyll cells are the site of photosynthesis. Now if we will observe the structure of the chloroplast, so we will find out that the chloroplast contains thylakoids, and these thylakoids are having the photosynthetic pigment chlorophyll, and this chlorophyll is responsible for the trapping of solar energy and the initiation of the process of the photosynthesis. Now here in the picture you can see that this is the structure of a chloroplast, typical chloroplast. Here you are observing it is bounded by two membranes, outer membrane and inner membrane, and then there is a matrix inside it. The matrix is called as a stroma, and in the stroma you are observing various thylakoids are suspended. Okay, and the membrane of these thylakoid is called as grana. Actually the membrane of these thylakoid is referred as grana, and if I will talk about a simple coin like structure, it is called as granum. So here you can easily observe that what is grana, or what is thylakoid, or what is stroma. Okay, and in stroma or in matrix you can see that various ribosomes or some other materials are also suspended. So I am talking about the structure of the chloroplast. So as we observed there, the chloroplast contains various thylakoids, and these thylakoids bear these thylakoid bear chlorophyll inside them, a photosynthetic pigment which is called as chlorophyll, and the chlorophyll is present inside the thylakoid, and the main function of the thylakoid is trapping of or capturing of solar energy. तो यानी कि जो क्लोरोफिल है आपका इन थाइलाकोइड के अंदर एक तरह का पिगमेंट, यही वो पिगमेंट है जो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है. एंड द मेम्ब्रेन सिस्टम ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी और द लाइट एनर्जी, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH. ठीक है, तो here in the picture once again you can see that what is grana. Now I am zooming it. So the membrane of the grana or the granule membrane, this is the responsible thing which is responsible for trapping of solar energy. यानी कि यही वो membrane है, granule जो membrane है, ठीक है, और जो membrane system है ग्रेना का, वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद ATP और NADPH की सिंथेसिस करता है. ठीक है, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइट रेडिएशन. दिस इज इंक्लूडेड इन द लाइट रेडिएशन पार्ट, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रही है. वाइल द बायोसिंथेटिक फेज, द नेक्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. द डार्क रिएक्शन इनिशिएट्स, एंड द डार्क रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है. नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट व्हाट इज ग्रेना एंड व्हाट इज स्ट्रोमा. तो ग्रेना मीन्स the thylakoids are compiling together and they are forming grana, and in the granum membrane or membrane system of the grana, the trapping of the solar energy is going to take place, means the light reaction is going to take place. While the another reaction, biosynthetic phase, occurs in the stroma, and where the carbon dioxide is going to reduce in the carbohydrates. Okay, now I am going to talk about the various pigments which are involved in absorption of solar energy or light energy. So you can observe in this slide that there are various photosynthetic pigments. Now chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids. So here I am showing you 4 different types of photosynthetic pigment which are responsible for absorption of different wavelength of light energy. Now initially I am talking about chlorophyll A.
तो क्लोरोफिल, if you will observe chlorophyll A, तो you will find out that it appears bright or blue green in chromatograph, means its color is quite bright and similar to the blue green color, and it is the major pigment which also forms reaction center. Reaction center is the main center which absorbs the most of the light energy during the photosynthesis, and it is also responsible, or it is also involved in the trapping as well as the conversion of the light energy into the chemical energy. Now the second kind of pigment is called chlorophyll B, and if you will see it, so we will observe that its color is yellow green. The initial one was bright or blue green, so it is yellow green in color, while the xanthophyll is the third pigment and it is yellow in color, while the last one carotenoid is also a kind of photosynthetic pigment, and its shade is yellow to yellow orange. And one more thing I want to discuss with you, कि mostly the chlorophyll A and the chlorophyll B are involved in the trapping of the solar energy, and as we know that the solar energy has, or the solar light has white light, and it has 7 different spectrums Vibgyor. So out of these 7 spectrum, the blue as well as the red region of the spectrum show high rate of the photosynthesis. Now I am coming to the main photosynthetic events. So as I mentioned earlier that the photosynthesis completes into 2 phases, the light reaction phase or the biosynthetic phase or the dark reaction phase. So today the very first step of the light reaction phase I am going to tell you what is light reaction and where does it occurs. So initially I want to tell you that the events of the photosynthesis which are completing in the presence of solar energy or in the form of in the presence of the light energy, these can be referred as light reaction. And light reaction is also called as photochemical phase, while the another one is called biosynthetic phase. The first one is called as, or light reaction is called as photochemical phase. So it includes various events. तो light reaction के अंदर कई सारे events आते हैं. Initially absorption of sunlight, then in the presence of the sunlight the water which is being absorbed by the plant going to split down. तो अब क्या होगा, अगले स्टेप में वाटर जो है वो स्प्लिट होगा. देन वाटर जब स्प्लिट होगा तो वाटर के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन बनेगी और H पॉजिटिव आयंस बनेंगे. तो ये जो ऑक्सीजन है इन द फॉर्म ऑफ द O2 इट विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. दिस इज आल्सो द स्टेप ऑफ light reaction. And finally the energy rich compounds will also form like ATP and NADPH. तो इसके साथ साथ ATP और NADPH बनेंगे. तो क्या क्या इवेंट होते हैं? फर्स्ट absorption of solar energy, then splitting of water, then evolution of oxygen into the atmosphere, and formation of high energy rich compound ATP and NADPH. Now light reaction, as I mentioned earlier that कि light reaction जो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, एंड इट इन्वॉल्व्स. तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस और कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट यूनिट्स. तो ये जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस इनको बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दीज आर अरेंज्ड इन 2 डिस्क्रीट यूनिट्स. तो 2 टाइप के ये डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में आपके ये कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड आइदर photosystem 1 or photosystem 2. So there are 2 types of LHCs. LHC means light harvesting complexes are there in the grana, ठीक है. And these are referred as photosystem first and photosystem second. Now actually what are these LHC, light harvesting complex है क्या एक्चुअल में? I want to tell you that कि the light harvesting complexes are made up of hundreds of pigment molecules which are bounded to protein within the photosystem 1 and photosystem 2. तो यानी मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रेना है, ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में कई तरह के आपके क्या होते हैं, LHCs होते हैं. 2 तरह के LHC होते हैं आपके, ठीक है. आखिर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं. तो आखिर ये हैं क्या, ये किस चीज़ के बने हुए हैं? तो इफ़ यू विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, तो वी विल फाइंड आउट दैट कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स के, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो ये क्लोरोफिल के बने हुए होते हैं, ठीक है. और क्लोरोफिल के अलावा ये जेंथोफिल भी हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है. और ये सारे पिगमेंट जो होते हैं एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है. चाहे आपका PS1 यानी फोटोसिस्टम 1 हो या PS2, दोनों केसेस में आपके हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट्स होंगे, एंड दीज आर बाउंडेड विद द प्रोटीन्स. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दैट
कई सारे पिगमेंट्स आपस में प्रोटीन की मदद से बाइंडेड हैं और इसमें एक रिएक्शन सेंटर आप देख रहे हैं। रिएक्शन सेंटर जो होता है बेसिकली एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्री रहता है, वो बाकी पिगमेंट्स के साथ बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है एक्चुअली। नाउ ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स बाउंडेड टू द प्रोटीन एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एंटीनी। तो इस तरह से आपने देखा कि एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में कई सारे आपके जो पिगमेंट्स हैं वो प्रोटीन की हेल्प से बाउंडेड हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल और वन पिगमेंट। कई सारे हैं, हंड्रेड्स हैं जो बाउंडेड हैं, बट एक बाउंडेड नहीं है। जो बाउंडेड नहीं है वो क्लोरोफिल ए है और ये आपका एंटीनी या आपका लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन सेंटर बनाता है एक्चुअली। नाउ दीज पिगमेंट्स आर एब्जॉर्विंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। अब मैंने कहा कि जो आपका फोटो सिस्टम है, तो फोटो सिस्टम में आपके कई तरह के क्या है पिगमेंट्स हैं और अलग अलग पिगमेंट जो है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सोलर एनर्जी जिस भी इंटेंसिटी की जितनी भी वेवलेंथ की अगर फॉल करेगी तो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। द रिएक्शन सेंटर मैंने पहले बताया कि जो क्लोरोफिल ए है जो कि आपका बाकियों से अलग है, इज़ डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम। अब ये रिएक्शन सेंटर है, इसका काम दोनों फोटो सिस्टम में PS1 में अलग है और PS2 में अलग अलग है। नाउ व्हाट इज़ फोटो सिस्टम वन, आई एम टेलिंग यू। इन फोटो सिस्टम वन यू कैन ऑब्जर्व दैट क्लोरोफिल ए विच इज़ प्रेजेंट। तो ये जो एब्जॉर्ब करता है ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है इसकी लाइट को एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो क्लोरोफिल ए इन फोटो सिस्टम वन कैन एब्जॉर्ब अ पीक एट 700 नैनोमीटर, वाइल जो ये फोटो सिस्टम 2 है वहाँ पर जो मैक्सिमम जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की सोलर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एंड PS2. So if somebody is going to ask you what is the difference between PS1 and PS2, so you can see that say that the chlorophyll A in PS1 has an absorption peak of 700 nanometer, while in photosystem 2 the chlorophyll has an absorption peak of 680 nanometer. So these are some basic events of the light reactions. So there are more events which I will tell you in my next video, ठीक है। आई होप सो कि you understood the today's concept कि that what is the site of the photosynthesis, what is its structure, what is light reaction, and what are its basic events. So I hope so you understood today's video. Still if you have any query please ask. Thank you, bye bye and have a nice day.